When I decided to get married and I decided to leave the country, choice ज़्यादा था नहीं actually. शादी के बाद भी मैं काम करूँ या whatever it is. Industry somewhere is a little unsafe right now for newcomer. We've moved way ahead. There's a law to protect each one of us. I am not here because I am Namrata's sister, or I'm not here because I'm Mahesh's sister-in-law. Yes. If you don't know, I'm talking about Ranveer, who made a statement on Samay Raina's show. And I don't think that we need the whole nation to stand up for us. I came back in 2010 और फिर उसके बाद मुझे 2013 में टेलीविजन में अपॉर्चुनिटी मिली और कहते हैं ना गोल्डन पीरियड. आई थिंक आई हैड द बेस्ट 4 years. मुझे हमेशा बोला जाता था घर में कि आप रोते हो ना, आप क्यों रोते हो? मैंने कहा डोंट मिसअंडरस्टैंड माय रोना फॉर वीकनेस. हाय, आई एम शिल्पा शिरोडकर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मिडडे. हेलो एंड वेलकम टू मिड डे. दिस इज शची चतुर्वेदी और आज हमारे विमेंस डे स्पेशल में मेरे साथ एक वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने टाइम में लिटरली सबके दिलों पे राज किया है और बिग बॉस में तो जेन जी का भी दिल जीत लिया है. सो हेलो एंड वेलकम शिल्पा शिरोडकर विथ मी ऑन Midday. Thank you, Shilpa, for joining us. Thank you so much for having me on your show. It's a pleasure and an absolute delight to be here. Starting with, हम Women's Day special shoot कर रहे हैं, तो what is your definition of a strong woman? For me, a strong woman is someone who balances life beautifully, also looks after her family, her work, and is all the time smiling. शिल्पा, अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो आप भी अपने टाइम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थी, क्योंकि उस टाइम में आपको बोल्ड एक्ट्रेस का टैग भी मिला था एंड आपने बहुत अर्ली स्टेज में अप्स एंड डाउन्स देख लिए थे. आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू वन ऑफ योर इंटरव्यूज एंड व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट हाउ इंडस्ट्री जिंक्स्ड यू. उस टाइम पे यू वर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग. यू डिसाइडेड कि मुझे करना है, पर फिर why did you get married so early and उसके बाद बैक सीट क्यों ली? नहीं, एक्चुअली जैसे आपने कहा कि that jinx tag और मैं I went through that whole phase. I went through it because I had a very strong woman by my back, my mother, and they never made me feel otherwise. मुझे ये jinx wings का तो word का meaning भी I don't think मुझे पता होगा उस टाइम पे, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है और मुझे अच्छा बुरा काम ऐसे भी चॉइसेस नहीं थे. तो आई जस्ट वांटेड टू वर्क टू प्रूव कि यू नो व्हाट, आई कैन वर्क, आई एम एन एक्टर, आई एम हियर टू स्टे. शादी इतने जल्दी क्योंकि आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 27, तो बहुत जल्दी नहीं थी. हमारे इसमें कहा जाता है ना कि हर चीज समय पे होनी चाहिए, और मेरी माँ ये चीज पे बहुत मानती थी कि हर चीज समय पे होनी चाहिए. And for her, 27 was the right age, and I found my man and I got married. और तभी you know how it was that in the 90s it was कि I got married in 2000, so it was early 2000, मतलब just 2000, और तब इंडस्ट्री का ये बहुत अलग था तरीका सोचने का या काम करने का, या काम शादी के बाद मिलना भी बहुत मुश्किल था तभी. When I decided to get married and I decided to leave the country, because my husband was a student at that time. तो choice ज़्यादा था नहीं actually. शादी के बाद भी मैं काम करूँ या whatever it is. And I think I did the right thing. आपने बोला अभी कि इंडस्ट्री का पहले सोचने का तरीका थोड़ा अलग हुआ करता था. What has changed? आपने क्या नोटिस किया? What has changed now for women? Well, the fact is that married women, mother of 20-year-old, are also working and they're doing great work. Today scripts are written with keeping them in mind, और क्या चाहिए हमें. And I think that I'm back today in the industry and there's just so much to look forward to. ऐसा नहीं है कि they will think कि अरे यार ये इसकी शादी हो गई है, इसकी अभी तो 21 साल की बेटी है, इसको कहाँ काम मिलेगा. पहले ऐसे सोचते थे लोग, क्योंकि बहुत कम लोग होते थे जो एक्सेप्ट करते थे एक हीरोइन को शादी के बाद भी एक्सेप्ट करना एज अ मेन लीड एंड ऑल. लेकिन अभी सब बदल गया. अच्छा, did you regret taking a back seat just after getting married? Not at all, never, not for a moment. I am so glad. I'm going to be married 25 years now, this July, और मुझे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है.
ना मुझे रिग्रेट है कि मैं इंडिया छोड़ के गई, ना मुझे रिग्रेट है कि मैंने इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे ज़िंदगी में हुआ है हैज़ हैपेंड फॉर ऑल द राइट रीज़न। But then you came back and you started doing television, यस, आई right? केम बैक इन 2010 और फिर उसके बाद मुझे 2013 में टेलीविजन में अपॉर्चुनिटी मिली और कहते हैं ना गोल्डन पीरियड। आई थिंक आई हैड द बेस्ट 4 years। मैंने 3 शोज किए बैक टू बैक और इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, इतना अच्छे स्क्रिप्ट्स, it was just unreal, that experience also, and I love doing television. If I talk about the era जहाँ पे आप films कर रहे थे 90s की बात करूँ तो you have worked with all the top actors, male leads of that time. What it was to work with maybe a Govinda, maybe a Mithun Chakrabarti, क्या डिफरेंस था तब में और आज में? आज के टाइम पे मैंने अभी तक काम शुरू नहीं किया है तो मैं अभी के बारे में बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे तब की बात पूछोगे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे कभी भी एक न्यू कमर जैसे ट्रीट नहीं किया। दे वर देयर फॉर मी फॉर रिहर्सल्स, दे वर देयर फॉर मी फॉर रीटेक्स। कभी भी ऐसा नहीं बोला कि यार पता नहीं कहाँ से आ जाते ये लोग, काम नहीं पता, ये नहीं पता। They were so loving that I just became a part of the industry so easily. तो मेरे लिए it was like, you know, ऐसा ही है जिंदगी, इसीलिए मैं शायद ऐसी हूँ, क्योंकि I don't know otherwise. I don't know that अगर न्यूकमर को किसी और तरीके से अगर ट्रीट करो तो वही सही है, मुझे वो पता ही नहीं है क्योंकि मेरे साथ वो हुआ नहीं है। So people were more secure back then? I guess, I don't know. I'm like I said कि मैंने इस जनरेशन के साथ काम नहीं किया है, तो But I you don't know the were difference. in Big Boss, मतलब you were with how many 18-19 people in the Yeah. house, तो experience सोच से अलग समझ है, तो आ जाता है। सोच अलग है for sure. This generation thinks very differently, and obviously we come with a lot of experience. तो जैसे उन लोगों ने मेरे साथ मुझे ट्रीट किया जब मैं नहीं थी, I think that comes also with experience and age. तो शायद मेरा तौर तरीका बात करने का या एक सिचुएशन को हैंडल करने का थोड़ा सा अलग था बाकी लोगों से, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज नोबडी राइट और रॉन्ग, टू बी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट द वे यू आर। But in 2025 we are right now, and still there is a conversation around Hema committee, there is conversation around Me Too movement, there's a lot of conversation around these things. Do you think industry somewhere is a little unsafe right now for newcomer actresses? Honestly, I don't think the industry is unsafe at all. It's about you. I feel कि if we are strong enough to say no, it's fine. And you know, the world is like that. Why only our industry? I think everywhere in the world. Like मुझे किसी ने कहा कि एक सिटी है, मैं भूल जाती हूँ, वहाँ पे शाम के 7 बजे के बाद girls are not, it's not good for a girl to go out of the house. And I'm like, really? Says, yeah, you know, and it's not only, we talk about our country, but it happens everywhere. Like, I'm sure it happens abroad also. But I feel that a woman is a very strong identity. You can't underestimate her willpower, her mind, her heart. Most of us think from our heart, and that's why we fall a little weak, but we are extremely strong. मुझे हमेशा बोला जाता था घर में कि आप रोते हो ना, आप क्यों रोते हो? मैंने कहा don't misunderstand my रोना for weakness. I said कभी कभी क्या है ना कि मैं जो चीजें मेरे सामने हो रही है मैंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया. It's a first time for me, so I feel that oh my God, I need to, how do I take this frustration out? तो उसके वजह से, but I don't think that tears make any woman weak. In today's world, when it takes just 24 hours for people to take actions against a loosely made statement by some content creator, I know, if you don't know, I'm talking about Ranveer, who made a statement on Samay Raina's show. It takes years for government or for the court to make a judgment against someone who is accused of, for say, raping someone.
Do you think we are lagging behind there for women's safety? I think we've moved way ahead Okay. already. जो चीजें 5 साल पहले होती थी, जो अब हो रही है, we've moved way ahead. There's a law to protect each one of us. Yes, certain situations and circumstances are different, but we should not ever deny what the system is doing for us. And we have to appreciate that. Instead of just saying कि अरे बहुत time लग रहा है, क्यों इतना time लग रहा है? Why don't we, when we look back 10 years ago to today, things are different. Today, I'm sure your today's generation, you feel far safer today than you would probably felt 10 years ago. So why not talk about the good that is happening instead of talking about the bad that is not happening or that is taking so long to happen? I think we all sitting in this room today will only appreciate the fact that yes, there is a movement and the movement is for the better. There are a lot of women who've been through this problem 5 years ago, 2 years ago, 1 year ago, which has never been heard. Today, people are hearing them. Today, people are there for them. So appreciate that. And I don't think that we need the whole nation to stand up for us. We alone can do it, but do it for the right reasons. That is my point of view. Right. Okay. Coming back to your journey, आपने काफी time काम किया, then you took a back seat, then you came back, did television, and now this is your third inning Yeah. with Big Boss, and a lot more is in store for you, I'm sure. But being Namrata Shirodkar's sister or Mahesh Babu's sister-in-law, do you feel people judge you for that, that you are not doing as much work as Mahesh is doing, for example? Do you think people judge you? Honestly, first of all, they are family. For me, there's never a comparison in my head. There are always a mix of audience that you will get. There's one audience who will think there's something lacking behind. There's one who will think that, wow, she's doing this. Now, I have my own identity, which I am here for that reason. I am not here because I am Namrata's sister, or I'm not here because I'm Mahesh's sister-in-law. Yes, he's my brother-in-law and she is my sister, and we are family. But, and I'm not here to please everyone. I'm doing what I think is the best thing to do. And that's what it is. मुझे ना किसी को सफाई देने की जरूरत है, ना मुझे इच्छा भी है किसी को सफाई देने के लिए, क्योंकि मैंने ये घर में सीखा कि आप सबको प्लीज नहीं कर सकते जब तक आपको पता है आपके दिल में, आपके दिमाग में कि आपने सही किया है, और अगर गलत भी किया है तो उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन करो. ये मेरी सीख है अब, you know, and I think I'm just sticking to that. Thank you so much for joining us Thank today. you so much for having me, and happy Women's Day to all the beautiful women out there in the world. Thank you, and keep watching Midday. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.